काटिल काटिल हम हैं काटिल वाले, काटिल काटिल हम हैं काटिल वाले। झर झर झरीब पानी रे, घड़ 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 घड़ी सावधिव आकाश पुणी रे। झर झर झरीब पानी रे, घड़ 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 घड़ी सावधिव आकाश पुणी रे। सुखा बिगारे लहरीब सबुज किरण रे, जेमिति राति पर दिन हुए रे, भूली जिबा ए कष्ट दिन रे। गार सहरी सुभिव आम स्कूल पिलांक कोलाहल रे। माखिरानिया माखिरानिया माखिरा Good morning, dear students. Today we start the characteristic properties of electron. Previous क्लास में हम डिस्कस किए थे कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लास्ट क्वेश्चन दिए थे क्या, चार्ज on one electron is equal to how much? 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Then charge on 1 mole electrons is equal to 6.022 10 to the power 23 into 1.602 10 to the power minus 19 coulomb, that is equal to 96500 coulomb, that is equal to 1 Faraday. Is it clear? Chandrasekhar, is it clear? 1 Faraday. 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. बच्चों, when this 96500 coulomb or
1 Faraday when passed through। एक क्वेश्चन दिए थे लास्ट क्लास में, जो तुम्हारा डाउट था, सबका डाउट था, थोड़ा अभी हमें डिस्कस कर रहा हूं इसी क्वेश्चन के बारे में। 96500 कूलम और 1 Faraday when passed through molten NaCl, so what happens? What happens? A question. This question is given to you in the last class. क्या एक क्वेश्चन होगा और 1 minute is given to you, तो when 1 Faraday और 96500 कूलम when pass through molten, molten मतलब क्या है? molten मतलब molten NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड present in molten state or liquid state, not in solution state, but in liquid state। तो what happens, क्या होगा? कितना मास कैथोड में डिपॉजिट होगा, कितना मास एनोड में डिपॉजिट होगा, क्या प्रिंसिपल होगा, क्या रूल होगा? कैथोड में कौन डिपॉजिट होगा, एनोड में कौन डिपॉजिट होगा, बोलो। 1 minute इज गिवन टू यू। पहले इस क्वेश्चन को कॉपी कर दो पेपर में, आपका नोट कॉपी में थोड़ा कॉपी कर दो। तो क्या होगा चंद्रशेखर? अच्छा, बच्चों NaCl इलेक्ट्रोलिसिस क्या फॉर्मेशन होगा? Na प्लस Cl माइनस। इसको बोलते हैं क्या? कैटायन। इसको बोलते हैं क्या? अनायन। पॉजिटिव आयन को बोलते हैं कैटायन, नेगेटिव आयन को बोलते हैं क्या? अनायन। तो कैटायन कौन सा इलेक्ट्रॉन को पास जाएगा और अनायन कौन सा इलेक्ट्रॉन को पास जाएगा? तो कैटायन गोज टू कैथोड, कैटायन goes to कैथोड। कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन, कैथोड मतलब नेगेटिव। तो कैटायन goes to कैथोड, C goes to C। C मतलब कैटायन, here C मतलब कैथोड, C goes to C, कैटायन goes to कैथोड। अनायन negative goes to anode, anode मतलब पॉजिटिव। तो कैटायन पॉजिटिव चार्ज goes to कैथोड, नेगेटिव चार्ज anion goes to anode। anion goes to anode। complete। अच्छा, then what happens? Write the equation for cathode। at cathode तो Na प्लस कैटायन
when Na plus goes to cathode. Cathode matlab negative. This cation, positive charge, when goes to negative electron, it becomes neutral. When cation कैथोड को पास जाकर क्या होगा, न्यूट्रल होगा. When cation goes to cathode it becomes neutral, चार्जलेस होगा. तो कैसे चार्जलेस होगा, इसका पास पॉजिटिव चार्ज है तो कैसे न्यूट्रल होगा, नेगेटिव चार्ज गेन करके न्यूट्रल होगा. नेगेटिव चार्ज कौन से, इलेक्ट्रॉन. तो Na प्लस गेट 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, न्यूट्रल होगा. डिपोजिटेड एट कैथोड. हो गया, डिपोजिटेड एट कैथोड. क्लियर बच्चों, लेट इट इज 1 मोल. when 1 mole cation sodium ion gain 1 mole of electron. So what amount of sodium deposited at cathode, 1 mole. बड़ा क्लियर, सबका क्लियर हो गया, क्लियर हो गया. तो when 1 mole of sodium cation reach on cathode gain 1 mole of electron, because here 1 positive charge gain 1 mole of electron produced but deposited at cathode how much, 1 mole of sodium. 1 mole of sodium. Is it clear? अच्छा बच्चों, ये जो 1 mole of sodium, 1 mole of sodium, 1 mole of sodium का मास कितना है, ना 1 mole of sodium का मास 23 ग्राम. एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास 23 ग्राम. बच्चों 23 ग्राम is equal to 1 gram atom. Mole concept. Atomic mass of any element is equal to how many gram atom? 1 gram atom. Ashish Mahapatra, is it clear? Atomic mass of any element बच्चों 1 gram atom. ये बात ठीक है, ओके. बच्चों सोडियम का वैलेंसी ऑफ सोडियम कितना है, वो क्या से चंद्रशेखर, आशीष, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम. बच्चों व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम, आशीष महापात्र, कैन यू से, चंद्रशेखर, कैन यू से व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम. आशीष, रोनित, very good. What is the valence of sodium? What is the valence of sodium? बेटा valence of sodium is equal to 1. Clear? Valence of sodium is equal to 1. बेटा if the valence of sodium is equal to 1, then what is the equivalent mass?
very good, very good. Vijay, Asta, Virendra, Ashish, Chandrasekhar. Acha, what is the equivalent mass? What is the equivalent mass? Satyaranjan, very good. What is the equivalent mass? What is the equivalent mass? नहीं, बैलेंस ही वन हो गया, ये बात सही है। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में। व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास? व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास? वेरी गुड स्मृति रेखा, वेरी गुड। तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू atomic mass by valency, that is equal to 23 by 1 is equal to 23. So equivalent mass is equal to 23, that means 1 gram equivalent. This is equal to 1 mole, 6.022 10 to the power 23 atoms. Is it clear? Very good, Vijay, Smriti Rekha, very good, all of you. अच्छा, this much, चलो when, अच्छा बेटा, 1 mole of electron, sodium cation gain 1 mole of electron, is it clear? अच्छा, when it gain 1 mole of electron, चलो 1 mole of electron is equal to 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. Is it clear? So when 1 mole of electron, that is equal to 1 Faraday, that is equal to 96500 coulomb pass. Sodium deposited how much? 1 mole, 23 gram, that is 6.022 10 to the power 23 atoms. That is equal to 1 gram atom, that is equal to 1 gram equivalent. So when 1 mole of electron whose charge is equal to 1 Faraday or 96500 coulomb, when passed through molten NaCl, then 23 gram of sodium or 1 gram of atom of sodium or 1 gram equivalent of sodium deposited at cathode. Is it clear or any doubt? If no doubt, then we proceed. बेटा बोलो, चंद्रशेखर, आशीष, रोनित, विजय, वीरेंद्र, सत्य, स्मृति रेखा, आस्था, रवि नारायण, बोलो अभी क्या डाउट है क्या इसी बारे में बोलो और वी प्रोसीड नेक्स्ट। ठीक है, नाउ कॉपी इट। वेरी गुड वीरेंद्र। दैट मीन्स 1 Faraday, that is equal to 96500 coulomb deposited. ठीक तरह से बुझो, understand clearly, because again I am giving a question to you for your practice. So 1 Faraday 96500 coulomb deposited 1 gram equivalent of sodium at cathode. Note कर दो, note it. Subhasmita, very good, no doubt. Ronit, no doubt, very good. Now I will rub it. This is clear. Then add anode.
एनोड इज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज के पास, एनोड के पास कौन सा चार्ज जाएगा? नेगेटिव चार्ज जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या है? Cl माइनस। Cl माइनस। तो एनोड है पॉजिटिव चार्ज, ये है आनायन। आनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। आनायन गोज टू एनोड, A goes to A goes to A, ये मतलब आनायन, ये मतलब एनोड। A goes to A, आनायन goes to एनोड, कैटायन goes to कैथोड। तो Cl माइनस। जब आनायन goes to anode, it becomes neutral, chargeless. तो how an anion become chargeless, become neutral? By losing electron, by removing electron. तो Cl माइनस माइनस इलेक्ट्रॉन गिव Cl। बेटा ये जो Cl मतलब क्या है? Cl और हाफ Cl2। वन क्लोरीन एटम और हाफ मॉलिक्यूल। इज इट क्लियर? इसी बारे में किस डाउट है क्या? Cl, it is difficult to write Cl because it is an elementary gas. Chlorine is a gas. Chlorine is a gas. कौन सा गैस? एलिमेंटरी गैस। एलिमेंटरी गैस नेवर एग्जिस्ट इन एटॉमिक स्टेट, ऑलवेज exist in molecular state. When an atom is written in the molecular form, it is a half molecule. So half molecule and one atom both are same, but in written format it is written in the molecular state. That's why I written here as half Cl2. Any doubt? Very good. अच्छा बेटा, this is 1 mole is equal to 1 Faraday is equal to 96500 coulomb. This is also chlorine 1 mole. 1 mole how many atom? 6.022 10 to the power 23 atoms. So when 1 mole of electrons, 1 mole electrons, that is equal to 1 Faraday, that is equal to 96500 coulomb, when pass through Cl minus ion, this chlorine is half mole or 1 mole of a chlorine atom or half mole of a chlorine molecule discharge liberated at anode. So 1 mole is equal to 6.02 the tungsten atom, that is equal to 35.5 gram, that is equal to 1 gram atom. Valency of chlorine 1, equivalent mass, atomic mass by valency 35.5 by 1, that is equal to 35. So that is equal to 1 gram equivalent. 1 gram equivalent is equal to equivalent. Same. So here also when 1 mole electron, that is equal to 1 Faraday, that is equal to 96500 coulomb, when passed through chlorine gas. So how many mole of chlorine deposited? 1 mole of chlorine or half mole of molecule. Half mole molecule or 1 mole chlorine atom, both are same. So 6.02 to 1 gram 35.5 gram डिपोजिट होगा। 1 ग्राम एटम, वैलेंसी 1, इक्विवेलेंट मास 35.5, तो क्लोरीन का वैलेंस 1, एटॉमिक मास जितना है इक्विवेलेंट मास भी उतना है।
So equivalent mass is equal to 35.5 gram. This is called 1 gram. So when 1 Faraday 96500 coulomb pass, 1 mole atom डिपॉजिट होगा, 35.5 डिपॉजिट होगा, वो हो गया 1 ग्राम atom. Equivalent mass is also same, hence 1 gram. Here all of you, one question to all of you who can give the answer fast. Question जब ऐसे होगा क्या, when 1 Faraday, write the question all students, when 1 Faraday or 96500 coulomb pass through chlorine gas at anode, how much volume? How much volume when this charge pass through chlorine? So how much volume of chlorine liberated at anode? When this much, when 1 Faraday or 96500 coulomb of charge pass through chlorine, so how much volume of chlorine liberated? Just I will give you 2 minutes. Only 2 minutes. Immediately give the answer. Ronit, Vijay, Virendra, Satya, Smriti Rekha, Ravinarayan, Subhasmita, Asta, Satyaranjan, immediately give the answer. I will give you 1 or 2 minutes. आपका आंसर को मैं वेट करता हूं. गिव योर आंसर जल्दी जल्दी जल्दी. Then I will give a homework to you. नहीं वीरेंद्र 2 फैराडे नहीं, क्वेश्चन क्या है कि when 1 Faraday or 96500 coulomb pass, when 1 Faraday or 96500 coulomb pass, how much volume of chlorine, how much volume chlorine liberated at anode? Or 1 minute, you do it after the end of a class. In the gap time, you send the answer. You send the answer. This is the homework. You send the answer. Clear? Clear, beta? All of you. After the end of a class, take some time. Do it. Send to me. If any doubt, then I will discuss with WhatsApp group. Clear? Clear, beta? All of you? Virendra, Subhasmita, Ranit, Ravinarayan, Vijay, Smriti Rekha. Okay? You take some time. If you face some difficult, you take time. Then after the end of a class, after 11:45 p.m. AM, you send the answer in the group. Clear? Okay? Then I will rub it. Then बच्चों next mass of electron is equal to 9.1 into 10 to the power minus 28 gram. That is equal to
9.1 into 10 to the power minus 31 kg. Here 9.1 into this is by Thomson. This is by Thomson. Beta, all of you, this mass is known as rest mass of इलेक्ट्रॉन. ये जो मास है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10 to the power minus 28 ग्राम, that is equal to 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ये जो मास है बेटा, ये मास कौन सा मास है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. कौन सा मास है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. क्या है? रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये जो रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? Now when the scientist Thomson calculated the mass of an electron, at that time the velocity of an electron is very less, assumed to be rest, or velocity very less or zero, assumed to be rest. That's why at that time the mass calculated is known as rest mass of an electron, that is equal to 9.1 into 10 to the power minus 28 gram, that is equal to 9.1 into 10 to the minus 31 kg. Then you calculate next question, what is the total mass of 1 mole of electrons. Write this question, send it after the end of class. Write this question, what is the total mass of 1 mole of electron? Write it. The answer will send after the end of a class, in the gap time, after 11:45 or after 12. You will send the answer in the group. What is the total mass of 1 mole of electron? Then I will have it. Write the questions. Clear? Beta, if this is rest mass of electron, if this is rest mass of electron, then what is the mass of moving electron? Moving electron is equal to the mass of a moving electron is equal to rest mass divided by 1 minus v by 0 square mass of a moving electron is equal to rest mass divided by 1 minus v by 0 square whole root of. What is V? V is equal to velocity of a electron. V is equal to velocity of a electron. C is equal to velocity of a light. Clear? Rohit Kumar Mohan, very good. Your answer is correct. Very good, Rohit Kumar. Your answer is correct. अच्छा, तो what is the formula?
to calculate the mass of a moving electron, that is rest mass divided by 1 minus v by 0 square. What is v? V is equal to velocity of electron, c is equal to velocity of light. Two question. Write the formula. Write the formula first. Mass. How to calculate the mass of a moving electron? How to calculate the mass of a moving electron? Then question number one. Next question. What is the mass of moving electron when in a velocity of a electron is equal to velocity of a light? B रे velocity of a electron greater than velocity of a light. बेटा लिख लिया. What is the mass of moving electron when velocity of a electron is equal to velocity of a light? When velocity of a electron greater than the velocity of a light. Write it. हो गया? क्वेश्चन हो गया? क्लियर? The answer will send after the end of the class. I will rub it. Okay. बेटा then calculate करेंगे specific charge of electron. Specific charge of electron also by functions. Specific charge of electron is equal to E by N. Specific charge of electron is equal to E by N. E is equal to charge of electron M is equal to mass of the electron. So specific charge that is equal to phi is equal to charge to mass ratio. Write it बच्चों, write it. Charge to mass ratio. The specific charge of an electron is equal to E by M ratio. That is E by M. You know, there is one ratio. E by M ratio. That is charge to mass ratio. So, what is the formula to calculate specific charge? Charge divided by mass. E by M. Q by M. Whatever you write. E by M is charge of electron. M is the mass of electron. Q by N. Q is charge of electron, M is mass of electron, charge to mass ratio. Specific charge phi is equal to charge to mass ratio. That means phi, that is specific charge, directly proportional to charge, inversely proportional to mass. Directly proportional to charge, inversely proportional to mass. मतलब स्पेसिफिक चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्ज मतलब जिसका चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रोनियम,
मेजन, पाई मेजन, माइक्रो मेजन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, जिसका चार्ज सबसे ज्यादा होगा, इसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। ठीक है, देन स्पेसिफिक चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, मतलब जिनका मास और एनी सब एटॉमिक पार्टिकल और एनी फंडामेंटल पार्टिकल तीन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। मान लो हम तीन पार्टिकल लेंगे, एक है इलेक्ट्रॉन, दूसरा है प्रोटॉन, तीसरा है न्यूट्रॉन। तो इसका स्पेसिफिक चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज बाय मास, कंसीडर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, कंसीडर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। स्पेसिफिक चार्ज इनवर्सली प्रोपोर्शनल मास, जिसका मास कम होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा, जिसका मास कम होगा इसका स्पेसिफिक चार्ज ज्यादा होगा। अभी बोलो, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन किसका मास कम ना इलेक्ट्रॉन का मास कम? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज सबसे ज्यादा होगा। क्लियर? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक चार्ज? दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पेसिफिक चार्ज, और phi is equal to E by M. This is the formula. Phi is equal to E by M. Phi is the specific charge, ये वाला चार्ज, ये वाला मास। ये हो गया। तो phi is equal to E by N, phi of electron, phi of electron is equal to E by N, charge is equal to 1.602 10 to the power minus 19 coulomb divided by 9.102 10 to the power minus 28 gram. Hence, that is equal to 1.758 10 to the power 8 coulomb per gram. Now that is equal to 1.76 10 to the power 8 coulomb per gram. That is equal to 1.76 10 to the power 5 coulomb per kg. Write it. This is the value of a specific charge. Specific charge of electron. Beta, the next question, what is the effect of increasing velocity of a electron on specific charge? स्मृति रेखा, विजय, रविनारायण, रोनित, वीरेंद्र, शुभस्मिता, चंद्रशेखर, क्या होगा? नहीं, इस क्वेश्चन को लिख लो। यू विल सेंड द आंसर आफ्टर द एंड ऑफ अ क्लास। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ increasing velocity of an electron on specific charge?
जब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इसका इफेक्ट स्पेसिफिक चार्ज में क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? तो पहले बोलो क्वेश्चन का, द क्वेश्चन इज क्लियर टू यू? इफ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इंक्रीज हो गया, whether it is greater than velocity of light or anything, तो इसका इफेक्ट स्पेसिफिक चार्ज में क्या होगा? What is the effect of increasing the velocity of electron on specific charge? क्वेश्चन लिख लिया, then you will send the answer after the end of our class. Then beta next, density of a electron is equal to 2.17 into 10 to the power 17 gram per cc. Radius of electron is equal to 10 to the power minus 15 centimeter. 10 to the power minus 15 centimeter. Volume of a electron कितना होगा? कैलकुलेट करो वॉल्यूम ऑफ अ इलेक्ट्रॉन. वेरी गुड. अच्छा विजय आस्था, you are right. Specific charge decreases, then on increasing the velocity of a electron, क्यों इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज डिक्रीज होगा? तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी में क्या होगा? रेडियस, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये हो गया, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? क्लियर? वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कैलकुलेट करो, करने के बाद मेरे पास भेज दो, ग्रुप में भेज दो, चेक करो. तो हो गया. तो इलेक्ट्रॉन बारे में अब सब प्रॉपर्टीज हो गया. रेडियस क्या है, डेंसिटी क्या है, वॉल्यूम क्या है, स्पेसिफिक चार्ज क्या है, मास क्या है, सब हो गया. Then now तो और क्या है ना, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन. कैथोड रे बाय इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव इन स्ट्रेट लाइन. कैसे आपको मालूम होगा? द इलेक्ट्रॉन मूव इन स्ट्रेट लाइन. नाउ व्हेन एनी इंसुलेटेड बॉडी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैथोड रे. व्हेन एनी इंसुलेटेड बॉडी प्लेस्ड ऑन इट्स पाथ, then a sharp shadow falls on the backside that indicate like light cathode ray or electron move in a straight line. Is it clear? Then electron has massive particle.
Electron has velocity. Electron has also massive nature. But electrons are massive. That means electron has mass. If electron has mass and electron has velocity, then mass multiplying with the velocity, it gives momentum. Then electrons has some momentum which is obtained from its massive particle with velocity. Is it clear? In the effect of electric and magnetic field, it is clear that the negative cathode ray has negative charge. It is known as negatron or negative charge particle, which is known as electron. इलेक्ट्रॉन has a massive particle. ये कैसे मालूम होगा? Let's take a paddle, light हल्का, light paddle wheel. Fall the cathode ray on it. Then this light paddle wheel starts to rotate. Starts to rotate or starts to move. That means when the cathode ray or the beam of electron fall on the light paddle wheel, then it starts to rotate. It indicates that this electron or electron has some massive nature, and when it strike the cathode ray, strike the paddle wheel, it creates some force. Due to force, it starts to rotate. It indicates that, it proves that cathode ray or electron, beam of electron has some massive nature, and the mass is known as rest mass of electron, that is equal to 9.102 into 10 to the power minus 28 gram, or that is equal to 31 kg. Clear? When it passes through electromagnetic field, this is positive, this is negative. This is the when it passes through electromagnetic field, the ray bend towards positive plate. Bend towards positive plate. As it bends toward the positive plate of the electromagnetic field, then it has which charge? Negative charge. Which charge? Negative charge. ये जो strength of a bending, ये जो strength of a bending, the strength of a bending depends upon mass. तो ज्यादा बेंडिंग होगा तो मास कम होगा. If it will pass a straight line, तो बेंडिंग कम होगा क्योंकि मास लेस, and electron has massless particle, very less, 10 to the power minus 31 kg or 10 to the power minus 28 gram. Due to its very less mass, इसका बेंडिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. बहुत बेंड होगा with respect to anode range. Anode range थोड़ा कम बढ़ेगा, कम बेंड होगा क्योंकि प्रोटॉन का मास थोड़ा ज्यादा है फ्रॉम इलेक्ट्रॉन. ये हो गया. तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक कंप्लीट हो गया. फिर हम जाएंगे किसका? प्रोटॉन. Then discovery of anode ray or proton by E. Goldstein. अच्छा, अभी तो हमने डिस्कस किया इसके बारे में इलेक्ट्रॉन. अच्छा, हाउ कैन यू कंफर्म दैट? नाउ इट वाज कंक्लूडेड दैट
atom contain electron, some particular electron. How can you prove that the atom contain positive charge particle? क्योंकि अभी तो हम हमें प्रूव किया कि इलेक्ट्रॉन एटम में इलेक्ट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, वो बात समझ में आए। दूसरा बात क्या है, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो तो सबको मालूम है, एंड एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अभी हम क्या प्रूव किया ना एटम कंटेन सम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, तो अब प्रूव किया एटम कंटेन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, सबको मालूम है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो कैसे न्यूट्रल लगा, इफ इट कंटेन सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जितना इलेक्ट्रॉन होगा जितना प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव, तो नेगेटिव पॉजिटिव न्यूट्रल, ताले आज an atom as a whole electrical neutral, it is clear that the atom contain same number of positive charge particle total. From the logically truth, logically argument, logically conversation, it is clear that an atom consists of some number of positive charge particle total. Clear? Then in next class I will discuss about the characteristic properties of a proton. If any doubt, then we send me in the group, and what are the questions given to you, please send the answer. If any doubt, then I will clear it. Then अभी और एक questions given to you. What amount of substances deposited at cathode and anode when 1 Faraday 96500 coulomb pass through molten magnesium chloride. This is the question. Write this question. Thoroughly go through the questions. What the question is asking, then write the answer. Please send within 1 hour after the end. Now the class is end. What are the questions given to you? Please send it. Bye bye. See you in the next class.
धन्यवाद।